Welcome friends, UGC NET for Code 17 Management was conducted on 16th of June for June 2023 exam. So आज हम लोग क्या करेंगे? We'll go through the entire paper 2 for Management Code 17 और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन उसके सोल्व करेंगे. So हमारी पूरी टीम मिलकर इसको करेगी. I'll do some of them, बाकी लोग भी कुछ कुछ करेंगे. Before I do that, if you want to understand कि UGC NET Code 17 के लिए any resource which you are looking for, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? You can go on the website of Human Pietas. अगर आप होम पेज पर आओगे, there is a section everything about UGC NET. Go to Management Code 17 और यहाँ syllabus. You can also download previous paper, both paper 1 paper 2 जो कि आंसर की के साथ दिया हुआ है, कट ऑफ एनालिसिस, एलिजिबिलिटी, previous paper analysis, or you can also go through the study material and the coaching classes which we have for you. You can also look at this and you can prepare for code 17 management with human peritus. So guys, शुरू करते हैं and we'll go through all these questions for June 2023 और एक एक करके हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है. So guys, first one which is the following is type 2 error. So guys, what is type 2 error? So our null hypothesis can be either true or it can be false. ठीक है. Now either we can reject null hypothesis or we can choose not reject null hypothesis. We never select null hypothesis. Either we reject or we do not reject. ठीक है. If this is the scenario, then we are happy. If this is a scenario, then we are happy. If it is true and we reject it, it is nothing but type 1 error. And if this is false and we do not reject it, then this is type 2 error. And therefore, in this case, the correct answer is option B, that we have accepted that incorrect hypothesis. Next one. Arrange the descending order value of following growing perpetuity, which makes the payment of 3000 in the next year. So guys, whatever is the payment, so how do you find the value? So whatever is the payment and divide by your discount rate minus rate of growth. इसका मतलब कि P का वैल्यू कब ज्यादा होगा जब डिनोमिनेटर, दिस इज एनीवे सेम 3000 ओनली. सो फ्रॉम दिस I माइनस जी, जब इसका वैल्यू सबसे कम होगा तब P का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. सो लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ I माइनस जी. सो 10 minus 8 2, 9 minus 3 6, 11 minus 6 5, 6 minus 5 1 and 4 minus 1 3. So D के केस में, in case of D value is lowest which is 1, therefore D will have highest value. और इसमें highest value अपना ये वाला D में दिया हुआ है and we have to put in the descending order, therefore correct answer is D. तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो लोवेस्ट वैल्यू कब होगा, जब I माइनस जी का वैल्यू हाईएस्ट होगा, विच इज ऑप्शन बी विच इज 6. और ऑप्शन बी इफ यू कैन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में इट इज गिवन हेयर, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी. Which of the following is a post offer takeover mechanism? Okay, this is green mail. So guys, green mail में क्या होता है कि जो कंपनी एक्वायर होने वाली है, that company buys back share from the acquirer, of course at a premium, and it is a kind of like paying ransom only, and this is known as green mail, option C. Next one on the वाल्टर वैल्यूएशन मॉडल. सो गाइस इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ईपीएस विच इज ₹4, then ROI is 20%, the return required by shareholder which is nothing but 16%, and payout ratio is 40%. अगर payout ratio is 40%, then dividend per share will become how much? Dividend per share will be 40% of 4 which is 1.60. ठीक है. अब if we want to find the value, हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? There are two parts. That first we find the present value of all dividend payments, ठीक है, plus present value of all capital gains. ठीक है.
अब जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओल्ड डिविडेंड हम लोग कैसे निकालेंगे? सो गाइस 1.60 डिवाइड बाई 0.16 रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन प्लस प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? 0.20 इंटू 4 - 1.60 डिवाइड बाई के, and k is nothing but 0.16 and overall divided by 0.16, and you will simplify it, you will get 10 plus 18.75, and the correct answer will be 2.75, which is कुछ बुक्स में वॉल्टर फॉर्मूला अलग तरीके से भी दिया होता है, बट अल्टीमेटली तुम कैलकुलेट करोगे तो वो सब ऐसा ही आना चाहिए, ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट आर न्यू फर्म विल एंटर द मार्केट इन विच केस. सो गाइस होता क्या है दैट इन केस ऑफ perfect competition, so this is my P which is equal to AR which is equal to MR, ठीक है, and this is your एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. तो तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा? व्हेन यूर इन दिस एरिया, व्हेन यूर P is greater than ATC, which is option 1, and then your profit will be equal to this. Profit will be given by this area, and if there will be a profit, then only a new firm will enter the market, and correct answer is A. Okay, next one. Which of the following identities state that one extra percentage of unemployment? This is Okunla. Okunla क्या बोलता है कि अगर employment, अगर unemployment, so what it says, let me write it again. If your unemployment will increase by 1%, तो इसका क्या impact होगा? Your GDP will go down by 2%. Option D. Which of the following are true about innovations? Quite theoretical question, खुद से भी कर सकते हो. And correct answer is A, C and E. A, C and E, and which is option D. Next one. Which of the following will have positive elasticity? So guys, इसमें complementary goods and inferior goods will have negative elasticity. बाकी सब will have positive elasticity, and the correct answer is option A. Next one. Which of the following narrative explains Leontief paradox? So Leontief paradox क्या था? So earlier there was a theory of competitive comparative advantage which was given by Olin. उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो कंट्री कैपिटल में अबंडेंट है वो कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे, जो लेबर में है दे विल एक्सपोर्ट द लेबर. लेकिन व्हाट लियोनटिफ डिड, इन्होंने क्या पाया कि व्हाट यूएसए वाज डूइंग, ऑल्दो यूएसए वाज कैपिटल अबंडेंट, but still it was exporting not capital but labor and importing capital. Although capital abundant, still importing capital. So this was Leontief paradox, and which is given in the option C. Next one. So the following is not an element of trade relation mix. 12th A, product variety has got nothing to do with that. Then let's come to 14th, how population variance differ from sample. So your sample mean is written as mu in the population mean, and your n is replaced by n minus 1. Next one. Arrange the type of intelligence which computer can simulate. तो computer कितना आराम से simulate कर सकता है और कितना मुश्किल से कर सकता है. Of course, linguistic will be easier, which is nothing but language, and the highest, the most difficult will be your logical mathematical, and then you can see it yourself. The correct option will be A. For 21st, the correct answer is B, C, and D. This will reduce the risk, and your correct answer will be option B. Next one. If NPV is positive, it means what? Either A or B or E, and correct answer will be D. Next one. So again, this is a framework. This is a framework on CRM, customer relationship management, and correct answer is option C. An organization vision should include A, C, E. Although
I mean, B can also be a good option, but here this is poorly framed. But from the given options, A, C, and E is the best option, which is correct answer is C. So guys, in which method cash flows are reinvested at required rate of return, NPV? The sequence of steps in hypothesis testing, option B. Again, these are different concepts and हमें एक एक करके इसको समझना होगा. बट अगर आप देखो तो एंजल इन्वेस्टिंग कब हम यूज करते हैं? स्टार्टअप स्टेज पे. बाकी सब ऑटोमेटिकली विल मैच and therefore correct answer is option B. Next one, which of the following should not be included in balance of payment? In this case, option A is the correct answer. Next one. Again, this is from the topic of operations management. And if you'll see, allocation of job task is done by assignment program, which is given in the option C only. Next one. Again, contribution margin is given by what? Sales revenue minus variable cost. And D goes with 2 in option B only. Next one. In order to shorten the operating cycle, what can be done by a manufacturer? B, C, and E, which is given in the option D. Okay. Deviation from market portfolio, a point on capital market line that differentiate investing and financing decision based on risk capital is described by, this is given by separation theorem. Internal reliability क्या होती है? That repeated measurement will give the same result over a period of time. Which one of the following is true about line balancing? So guys, line balancing क्या करता है? Total amount of work is divided into tasks. बिल्कुल ठीक है. Line balancing mainly ensure that each workstation get approximately equal time. बिल्कुल ठीक है. Cycle time is determined by the minimum time. No guys, minimum नहीं. This will be maximum time. गलत. Line balancing is not useful. काफी बकवास बात लिखी है. Tasks are assigned in a feasible sequence. बिल्कुल ठीक. So A, B, and E. Correct answer is option B. 76 from investor view, from a stakeholder viewpoint, which is the following is least significance. So guys, baki dono, return of asset or if you return on equity or return of asset, these have impact on the overall financial performance of the firm. Only thing which has no impact is the option C, which is nothing but net income is greater than amount of working capital. It has got no impact either on financial performance or return to stockholder. Therefore, option C is the correct answer. Okay, now these are different research outcomes which were given by these guys. Correct option is option B. Okay, you can see that sunk cost is nothing but sunk cost is the cost which are about which you cannot do anything, which are not affected by the managerial decision, and therefore D goes with option 4 in one option only, which is C. Dimension reduction method, in this case, the correct answer is option B. Characteristics of industrial relations include an outcome of employment relationships in an organization, develop the skill and methods of adjusting to and cooperating with each other, creating rules and regulations to maintain harmonious relations. Government is not involved in shaping IR. Parties to IR and employees, their organizations and employers. So A, B, C, and E, all are correct statements, right? And government is not involved in shaping IR. So this is not correct. Government is involved in shaping IR, right? So accordingly, the answer to this question is option D. Following are the statements on the Mintzberg organizational type. Choose the correct statements. So if we look at the Mintzberg organizational types, we have simple structure, we have machine bureaucracy, professional bureaucracy, then we have divisional structure, and then we have advocacy or innovative kind of structure, right? So if we look at the options, entrepreneurial organizations primary focus on skill standardization, this statement is not correct. So we have to find out the correct statement in this question. So this is not correct. Why? Because
entrepreneurial organizations, they emphasizes on flexibility and adaptability. Professional organizations primarily focus on output standardization. Again, an incorrect statement. Why? Because they prioritize expertise and individualized services. So this is also incorrect. Innovative organizations primarily focus on mutual adjustment. So if you look at this option and this option, they are just totally opposite. So out of these two, only one would be correct. So innovative organizations primarily focus on mutual adjustment. This is correct. So automatically this goes incorrect. Missionary organizations primarily focus on norms and standardization. So this is correct. So accordingly, the correct answer to this question is option C. Which of the following are included in the workplace diversity? So if we look at the term workplace diversity, there can be diversity in terms of demography, cultural diversity, or generational diversity, educational diversity, skill diversity, cognitive diversity, gender-based diversity. So ethnicity, gender, and sexual orientation. So these are the part of workplace diversity. Career experience and geographic experiences, they have no place in workplace diversity. So the answer should be option B. Okay, next is arrange the following steps of job evaluation in the proper sequence. So again, a very simple, straightforward book question has been asked. So in the steps of job evaluation, what we start with choosing the benchmark jobs, right? So after choosing the benchmark jobs, we have to select the compensable factors, right? And then we go for assigning weights to the compensable factors. Okay, so this is the third step. And then we convert the percentages to points for each of the factor. Okay, then we define each factor's degree, and then we review job descriptions and job specifications, and in the last we do evaluation of the jobs, right? So accordingly, if we look at the options, correct option is option B. Okay, in the next question, two statements are given, right? To exist and be successful in a competitive world, a business has to be ethical. So straightforward, very simple statement has been given, and this is correct statement. Statement 2 says an ethical organization can be recognized on the basis of its corporate excellence and not on its relations with the stakeholders. So this is absolutely incorrect statement. It also depends on the relations with the stakeholders. So statement 2 is incorrect. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Answer C is correct. Okay. Next. We have to match organizational appraisal techniques with the names of their proposers. Again, very straightforward question. So if we look at the options, balanced scorecard goes with your Robert Kaplan and David P. Norton, right? Okay. And then we have economic value added analysis. It goes with your Howard J. Dressner, right? Sorry, economic value added analysis, that goes with your Stern, Stewart and Company, right? So this is your B. Okay, VRIO framework. For VRIO framework, who is the associated person? That is Barney, right? And for business intelligence, which is the name associated, Howard J. Dressner. Okay. So correct option is your B. Fine. Which of the following is a measure of appropriateness of organizational goals and how well these goals are being met? So this is nothing. This is your organizational effectiveness. So the term associated with this measure is organizational effectiveness. So answer is option C. A workman hired in place of permanent workman or probationer who is temporarily absent is called, so this is the question taken from your Industrial Dispute Act 1947, and this kind of workman is called Badly workman. So correct answer is option D.
Employees believe in the degree to which they affect their work environment, their competence, the meaningfulness of their job, and perceived autonomy in their work is known as psychological empowerment. So correct answer is option C. Okay, we have according to HRD scorecard developed by TVRLS India, HRD systems maturity score includes. So there are basically 4 dimensions to HRD scorecard. We have HRD system maturity, HRD competencies, HRD culture and values, HRD linkages to business goals, right? So if we check the subsets of HRD system maturity, then we find out that all these which are mentioned in the question, they are the subsets of HRD systems maturity, right? And these subsets are basically assessed. Okay, so apart from these very factors, we have training also, which is also assessed, manpower planning and recruitment, then OD interventions are also assessed, work development methods and systems are also assessed. Okay, so career development and succession planning is also assessed in the HRD system maturity. So correct answer to this question is option D. Okay. Next is, which of the following focus of OD interventions are relevant if the nature of intervention is unstructured? Again, see this diagram. What we can infer out of this diagram is that focus, when we talk about focus of intervention, it can be divided into static and dynamic. And if we are dividing the intervention on the basis of the nature, then it can be divided on the basis of structured and unstructured, right? So if you look at the diagram, so look at the question again, which of the following focus of OD interventions are relevant if the nature of intervention is unstructured? So we have to check out this very thing, right? So role negotiation, is there any point of role negotiation in unstructured? Look into this thing. So no, right? Development of internal facilitators, it is written here. Counseling, it is written here, right? Work review, it is not there. Again, team development, if we check from the question, it is written here. So team development, then your development of internal facilitators and counseling. All these are the answers to this question. So correct answer is option B. Which of the following prevent the majority of the managers from effective implementation and sustainability? So if we look at the options, we can also infer out of the options, right? Holotalk. So what we have to analyze? We have to analyze those factors which prevent managers from effective implementation and sustainability, right? With respect to their decision making. So holotalk, what do you mean by holotalk? Holotalk is empty or any kind of insincere communication with respect to real action. Debilitating fear means presence of fear in the organization that negatively affects the manager's decision making and action, right? So this is also going to prevent the majority of the managers. So this should be the answer. This should be the answer, right? Complex measurement systems, although complexity matters and it may it may affect the implementation and sustainability. However, it does not prevent the managers from being effective, right? Mindless reliance, again, what do you mean by mindless reliance? That is blindly relying on the existing methods or practices, right? Without critically evaluating their effectiveness. So these are the 3 factors which are going to prevent managers from effective implementation and sustainability. So answer is option B. Arrange the following steps of organization planning in the proper sequence. So what we have to arrange? We have to arrange the steps of organizational planning. So if you look at the option C,
This is quite, थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करना है. If you look at the options, firstly go through the options at once. So to start with, we are committed to achieve financial growth of our organization by fostering growth and creativity among our valued employees. So this is nothing, this is vision of the organization, right? And then to achieve excellence in human resource management and foster growth and creativity. This is mission of the organization, mission statement of the organization. Then to foster growth and creativity, it is goal 1. And then providing opportunities for growth of employees, again goal 2. So first the organization will foster growth and creativity, then it will make the goal to provide opportunities for the growth of the employees, right? And then in the last it will work towards framing the strategy. Okay, so this is how the question is going. Strategy, right? So vision statement, mission statement, goal statements, and then finally reaching to the strategy towards that vision and mission. So accordingly, the answer should be D. Okay. Okay, next question is entrepreneurs in journal are opportunity obsessed and leadership balanced. Very simple question. Answer is option A. Cash flows are grouped in the cash flow statement as per IND AS3 into which of the following major categories? So it is categorized into operating, investing, and financing activities. Answer is option D. Arrange the following causes of work stoppages in India in the ascending order. So if we look at the options, basically we have to determine that which of the causes they are less likely or more likely to be the cause of work stoppage. Okay. So leave and hour, so we have to arrange them in ascending order of severity. So leave and hours of work, that they are less severe, so they are less likely to work stoppage. Okay. Then we have bonus related issues, bonus related matters are also there, but they do not escalate to that level. Okay. Then we have indiscipline and violence. Yes, they are more severe than leave and hours of work, bonus related issues. Okay. Then we have retrenchment of personnel. Then it means they are also the significant causes of work stoppages. And in the last, wages and allowances. So if the workers are not given the proper wages and allowances, then they are leading to extensive work stoppages, right? Okay. So the answer to this question is option A. Next is, which of the following is not a fundamental principle of Kaizen? So Kaizen is nothing but continuous improvement. So there are basically 5 principles to Kaizen. So let it go is not the principle, let it flow is the principle. Okay, and the 5th principle which is not mentioned here is be transparent. Okay. So correct answer to this question is option A. Which concept states that profits are normally recognized when the title of the goods passes to the customer, not necessarily when money changes hands? So this is a question from accounts, and the answer to this question is realization concept, which is also called revenue recognition concept. Okay, so answer to this question is option B. Why do companies pursue a retrenchment strategy? So when we go through generic corporate strategies, there are 4 kinds of generic corporate strategies: stability strategies, expansion strategies, then we have retrenchment strategies, and combination strategies. So if you look at the reasons for retrenchment strategy, that is when firms not doing well, right? Or firm when they are not able to achieve their objectives. Okay. Or better opportunities in the environment are perceived elsewhere. Okay. Or the environment is seen so threatening that internal strengths are insufficient to meet the challenge. So that is why the correct answer to this question is option B.
An unfavorable overhead volume variance indicates that actual production was less than the normal level of output. Okay. Answer is option C. Which one of the following is not an extramural function of trade unions? So job security is not an extramural function of the trade unions. Okay. Okay, there are two statements on IFRS and GAAPs. First assertion says these are the two accounting systems competing for international acceptance. Okay, yes, this statement is correct. Okay, Indian accounting standards are in convergence with both IFRS and the GAAP. So Indian accounting standards, that is IND-AS, they are yes in convergence with the IFRS, but not necessarily to all the GAAP. So this statement is not correct. So that is why A is correct, but R is not correct. Okay, next question is your, which of the following are not motivational factors according to Herzberg? So Herzberg motivational theories have motivational factors and hygiene factors. So we have to determine which are not motivational factors. So interpersonal relations and your salary, they are hygiene factors in the Herzberg motivational theory. So that is why they are not in the motivational factors. Okay, fine. So answer is option A. The Gantt chart is applicable to product scheduling. Straight question. Answer is option B. Which one of the following is not the view of ethics among the following of the views? So utilitarian view, rights view, theory of justice view of ethics, all are there. But non-integrative social view is not in the list. That is why correct answer to this question is option D. Okay. Okay, let's look at the passage-based question in the paper. The most important step of ERP phase implementation is the dash phase. So answer to this question is gap analysis, and from where we can identify. If we look at the definition of ERP implementation from the passage, ERP implementation is a strategic activity requiring a comprehensive analysis of pre and post implementation scenarios. So pre and post implementation scenarios reflects the gap analysis. So that is why correct answer to this question is option B. In ERP implementation, which is not a constraint in the process of integration of different business entities. So if you look at the passage here, it is written, the integration process passes through tough phases of accounting for differences in segments, departments, and business processes, though with a unified managerial intent. So which is not a constraint. So functional is your departmental. It is related to departmental differences. Geographical is related to your segmental difference. Operational is your business processes difference, right? So which is not the constraint, that is managerial differences. Okay. So answer is C. Next is, for success of ERP, the issues to be considered do not include. So थोड़ा सा tricky question दे दिया इन्होंने. So if you look at the options, adaptability to changes in business process in the future. So here they are giving us कि कहाँ दिया हुआ adaptability की बात अगर आप देखो तो यहाँ से भी झलकती है. Enterprise need to transform business processes to respond to fast changing customer demands and survive the intense global competition. So this is basically an issue. Customizations to support varied business practices, flexibility and cost effectiveness. These are also talked about. Here it is written, both present and future business process scenarios need to be considered along with flexibility and cost. So this is also okay. Here they are writing ERP package free from the intervention of non-proprietary technology standards. But here they are writing one dilemma before the decision maker is the possible intervention of non-proprietary technology standards. So there is a possibility of intervention from the non-proprietary technology standards. Here in the options, they are writing that ERP package free from intervention. So this is not the case. Okay, fine.
So that is why correct answer to this question is option B. Okay, next question is organization. Why training is required to take full advantage of an ERP implementation? In this context, which of the following statements are true? So learning of the steering team on system performance is must for ERP implementation. Again, if you look at the definition of ERP implementation is strategic activity requiring a comprehensive analysis of pre and post implementation scenarios and intensive training, right? So we have to find out the true statements based on the training. So this is correct. And here in the last it is written. So inference based answers are there in this passage. Everybody in the organization should understand how ERP will be used to bridge how it is and how it is to need to be. तो एक इन्फ्लुएंस ये भी निकलती है आईटी डिपार्टमेंट नीड्स टू बी फुल्ली अवेयर. ठीक है, फाइन. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रेनिंग ऑफ फंक्शनल मैनेजर्स इन प्रोसेस एनालिसिस एंड रीडिजाइन इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली. This actually statement is nowhere reflecting from the whole passage. So that is why first and third is correct. Infer to be correct. Okay. Although that is not a simple question to answer. Which of the following is a precursor to ERP implementation? So it is business modeling. ठीक है, तो कभी भी ERP implementation से पहले क्या चाहिए होता है? That is business modeling. तो अगेन थोड़ा सा ये inference based ही है आंसर. फाइन. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए. Next is more competition. So again, a passage is on marketing strategies, and the question is saying more competition. It's a little bit easy passage, right? More competition in the early years of the business results in. Here it is straightforward given. Research shows that exposure to the competition in early stages of the firm life increases its long-term survival prospects. So increasing the chances of its survival in the long run. So answer is B. So straightforward answers are given in the passage itself. According to the passage, venture capitalists should. So venture capitalist की बात कहाँ पर हुई है? Here it is written, venture investors can help to create a similar dynamics by being careful not to overfund a new company. So in the option also, here it is given not overfund a new business. Answer is option D. The best way for a firm to survive in a highly competitive environment is focusing on customer needs along with lowering the cost. Okay, तो ये भी passage में given है. So best way for the companies to survive. Basically, let me check. कहाँ लिखा है? What we have to find out, the best way for firm to survive in a highly competitive environment. Customer needs along with yes. ये रहा. ठीक है. Challenging environment causes startups to be tightly focused on satisfying customer needs along with lowering and containing cost. Okay, which of the following is a type of competitive strategy? तो ये थोड़ा सा आपकी academic knowledge पे है कि कौन सी competitive strategy है out of these two, product differentiation. So answer is A. A strategy referred to in the passage that enable firms to create a new market space for themselves. So here it is given blue ocean strategy. So answer is option B to this question. Okay, the question says which one of the following is not a standardized characterization of stress? तो सारे ही characterized stress है, but imported stress जैसा कोई word नहीं होता, right? जैसे acute stress का माने short term stress हो गया, chronic stress का माने long term हो गया, stress का माने कि कोई भी आप challenge या thrill के लिए जा रहे हैं तो हल्का जो stress आ रहा है, यानी positive aspect. तो Bombay इसका आंसर है. Next is which one of the following motives were articulated by the J.M. Keynes for holding cash? तो इनकी बहुत ही popular 1936 की theory है, theory of general employment, income and money. तो उसमें उन्होंने ये दिया था कि मोटिव्स कैश होल्डिंग के क्या क्या हैं. तो प्रिकॉशनरी था, स्पेक्युलेटिव था और ट्रांजैक्शन था. तो एसी ही जहां कहीं भी है उसको सही टिक कर दीजिए. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आगे देखते हैं. हॉफस्टीट ने डायमेंशन दी है. हॉफस्टीट डायमेंशन ऑफ कल्चर वाज बेस्ड ऑन अ स्टडी कंडक्टेड एट, कहां पे हुई थी? 1970s के अराउंड जो आईबीएम में जो रिसर्च हुई थी उसी के हिसाब से हॉफस्टीट ने अपनी डायमेंशन ऑफ कल्चर दी थी. तो वो में इसका सही आंसर है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीडिया? ऑप्शन सी में बोलता है डिजिटल मीडिया इज लीन बैक मीडिया. नहीं,
लीन फॉरवर्ड मीडिया है, काफी इंटरेक्टिव रहता है, पैसिव नहीं है ये, एंड देयरफॉर इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चेंज कंसल्टेंट फंक्शन दिए हैं और कंसल्टेंट रोल दिए हैं, अगेन एकेडमिक क्वेश्चन है। ट्रांसजेंडिंग का इससे रिलेटेड होता है, ओवरऑल व्यू से रिलेटेड होता है, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस फैसिलिटेटिंग परसेप्शन से रिलेटेड होता है, परसेप्टिव ऑफ द रियलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो गया। और शॉक एब्जॉर्बिंग क्या होता है, हेल्प्स द सिस्टम टू कन्फ्रंट रियलिटी, सी का 2, एंड देन फाइनली डी का 1, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। Consumer buying behavior in situation characterized by high involvement but few perceived differences among the brand is known as, क्या है इसका सही आंसर है dissonance reducing buying behavior, जहां पे perceived differences कम होते हैं among the brands। Next is मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क से रिलेटेड बात पूछी गई है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट ई बिल्कुल सही नहीं है। ई इसलिए सही नहीं है क्योंकि स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम तो होता है हार्ड एस, पर स्टाइल जो होता है वो सॉफ्ट एस में आता है। यहाँ पे स्टाइल को भी हार्ड एस में दिया गया है, देयरफॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, सी एंड डी, विच इज ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रांड डायनामिक्स पिरामिड पूछा गया है, बहुत ही बेसिक एकेडमिक क्वेश्चन है। तो हम सब ने पढ़ा है कि प्रेजेंस मिनिमम रहता है, इसके बाद रिलेवेंस आता है, इसके बाद परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद एडवांटेज आता है, एंड देन फाइनली क्या आता है, बॉन्डिंग आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रांडिंग होते हैं, और इसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन है आपको सही आंसर दिख जाएगा, सी डी ए एन बी, ए ई एन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रूरल एंटरप्रेन्योर्स आर, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी जेनरिक इन नेचर होते हैं। इनको करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप वो स्टेटमेंट देखिए जो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। जैसे कि ऑप्शन ई कह रहा है कि डिफिकल्टी इन ओपनिंग बैंक अकाउंट ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम 1990s में नहीं जी रहे हैं, अब बैंकिंग सर्विस एक्स्ट्रा लास्ट माइल तक पहुंच गई है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा और ये ऑप्शन भी हट जाएगा। यहाँ के बाद आपका बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, सी की वैलिडिटी चेक करनी है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑन रिक्वायर्ड स्किल, इट सीम्स राइट, और इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। अगेन इसमें ए स्टेटमेंट भी देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक इज टू हाई। नहीं, गवर्नमेंट अगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है तो इंटरेस्ट वो जो भी रखेगी वो नॉमिनल रखेगी या फिर मॉडरेट रखेगी। तो अगेन ए और ई दोनों ही गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर हो गया बी एंड सी। आगे देखते हैं। असर्शन एंड रीजन पूछे हैं, ये भी जनरली आसान रहते हैं। क्या सवाल है, असर्शन में कहते हैं कि स्टीरियोटाइप एंड मेल सेंटर्ड विजन डिस्करेजेस सम वुमेन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज दैट कुड हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑन पीपल हु इंटरैक्ट विद द वुमेन एट द कम्युनिटी लेवल। बात एकदम सही है, ठीक है, इट हैपेंस। और आर भी अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम सही है, बट इसमें रीजन जो है वो असर्शन को समझा नहीं रहा है, हालांकि अपने आप में दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। एम्फोसिस ऑफ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और जो रिलेटेड डिसिप्लिन में इसका क्या इम्पैक्ट है, अगेन वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैक्रो, अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, ए का 1 हो गया, तो मैक्रो अप्लाइड यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ओबी का जो एप्लीकेशन है, मैक्रो एप्लीकेशन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में होता है। इसके बाद माइक्रो अप्लाइड की बात करें तो बी का 3 है, तो माइक्रो एप्लीकेशन एचआरएम में हो रहा है ओबी का। सी का 4 है, मैक्रो थ्योरेटिकल, यानी इसका मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, और माइक्रो थ्योरेटिकल हो गया आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बेसिकली मैक्रो और माइक्रो का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे बात चल रही है या फिर पूरे होल एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका इंपैक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ए और बी बिल्कुल ही डेफिनेशन को नहीं बताते हैं, पर सी डी एंड ई जो कि इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सिमुलेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अगेन ये भी काफी जेनरिक है, और ये ऐसी चीज है जो टाइम के संग बदल रही है, काफी रैपिडली बदल रही है, पर हमें एलिमिनेशन से सही आंसर पे पहुंचना है। तो अगर आप देखोगे तो इंट्रा पर्सनल कभी नहीं हो सकता, कभी भी एआई के बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि वो विद इन होके बात कर रहा है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल हट गए, ठीक है। अब बात सी की वैलिडिटी है, तो इंटरपर्सनल बिल्कुल करता है, आज की डेट पे एआई बात जरूर कर सकते हैं, तो इसीलिए एसीई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
lowering of cost that a firm often experiences when it produces 2 or more products simultaneously as compared to when they produce these products independently. Therefore, this is a straightforward definition of economies of scope, which is option B. Next देखते हैं, many consumers seeks to be different and exclusive by demanding less of a commodity as more people consume it. It is called, इसे हम कहते हैं snob effect. Option D is the right answer. आगे देखते हैं, which of the following is not a base of product related segmentation. जेनरिक है पर एलिमिनेशन से अगेन आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a justification or preferring ethnocentric approach to staffing. पहली बात तो ethnocentric approach होती क्या है, जिसमें हम MNCs की बात करते हैं और जो की पोजीशंस होती हैं वर्ल्ड वाइड जो होती है उसको होस्ट का जो नेशन है, यानी जहां जो नेटिव जहां की पेरेंट कंपनी है वहां के सिटीजन जो हैं वो पोजीशंस हायर करते हैं. तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा, हायरिंग होस्ट कंट्री नेशनल्स एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर. ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं होगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. अगेन इन क्वेश्चंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको ढूंढना होगा. आगे देखते हैं, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन विच कैन फॉर्म एंड रीफॉर्म वेरिड पैटर्न ऑफ कनेक्शन इज नोन एज. क्या होता है ये होता है आपका फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन. अराउंड 2000 में जॉनसन एंड स्टिलवर्ट ने ये टर्म कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो आज की डेट में नए ऑर्गेनाइजेशन हैं. और सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट इज फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन. आगे देखते हैं, which of the following outcomes will promote sustainable capitalism, right? केवल कैपिटलिज्म नहीं है, सस्टेनेबल कैपिटलिज्म है. तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म के वो सारे स्टेटमेंट सही होंगे. जैसे ए पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, डी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सी अलग ही बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, और ई एक नेगेटिव बात है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए बी एंड ई, और सॉरी ए बी एंड डी. तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी. आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. यहां देखिए कस्टमर की बात हो गई, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, एंड हेंस आर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 4.0. बिल्कुल अगेन वेरी जेनेरिक, because rapidly these things are changing, and secondly elimination is the best way to do it. तो ये तो बिल्कुल होगा. invasion of privacy, again environmental concerns भी है क्योंकि डिजिटल वेस्ट बढ़ रहा है, तो उसके चक्कर में एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आ रहे हैं. तो ए और ई तो होंगे ही इसका सही आंसर, और ये ऑप्शन केवल और केवल डी में दिया हुआ है, बाकी सारे सही नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. इसमें क्या होता है, इसमें हम इस मॉडल में बेसिकली बात क्या होती है कि हम जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना ही ज्यादा कंज्यूमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा. यानी कि इंटरनल ओरिएंटेड अप्रोच होती है. इसमें 4 फील्ड होती हैं, वही फील्ड ए सी और डी में ए सी और ई में दी गई है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज अरेंज द स्टेप्स ऑफ नोबल प्रोडक्ट डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. बहुत ही एकेडमिक एज वेल एज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन. इसका सही आंसर क्या है, सबसे पहले एम्पैथाइज करोगे आप, समझोगे कि कस्टमर की नीड क्या है, फिर उसको डिफाइन करोगे कस्टमर की नीड को, देन आप आइडिएट करोगे, देन आप प्रोटोटाइप करोगे, एंड देन फाइनली टेस्ट करोगे. तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं, arrange the following steps of marketing process in the sequential order. Again very generic, common sense से हो रहा है, और स्टेटमेंट ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट इज, 2 स्टेटमेंट है. पहला कहता है, if there are differences in consumer responses, brand name, product is essentially a commodity and competition will be probably based on price. यहाँ पे differences नहीं, indifferences वर्ड होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होता. अभी के लिए स्टेटमेंट गलत है. दूसरा स्टेटमेंट ब्रांड इक्विटी को डिफाइन करता है, बिल्कुल सही है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. आगे देखते हैं, अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. 4 अप्रोचेस हैं, सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी, और उसके एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. बिना सोचे समझे इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं, Statement 1, the status of the person being perceived will greatly influence other perception of the person. Right? जाहिर सी बात है, हम किसी को अगर परसीव कर रहे हैं तो उसका जो स्टेटस है उस आदमी का या फिर उस पर्सन का, उसको जरूर वो इफेक्ट करेगा हमारे परसेप्शन को. तो एकदम सही स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि उसी पर्सन के अगर विजिबल ट्रेट्स देखे जाए तो वो भी हमें इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे परसेप्शन को, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स, तो हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशन ग्रुप दिए हैं, स्ट्रेंजर्स, बाइनोकुलर्स, ट्रू फ्रेंड्स, बटरफ्लाइज. इसमें अगर आप देखोगे
तो स्ट्रेंजर्स और ट्रू फ्रेंड्स का सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि ए का 3 होना चाहिए विच इज बोथ लो, और सी का जो है वो 4 होना, सी सॉरी जो सी का है वो 2 होना चाहिए, दैट इज बोथ हाई, है ना। पर समस्या आती है बार्निकल्स और बटरफ्लाईज में। तो बार्निकल्स जो है वो स्टेटमेंट 4 के साथ जाता है जहां पे पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी लो रहती है बट प्रोजेक्टेड लॉयलिटी ज्यादा रहती है, और बटरफ्लाईज जो होता है वो आपका 1 के साथ जाता है जहां पे पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है बट प्रोजेक्टेड लॉयल्टी आपकी जो है वो कम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, which of the following is not an eligible criteria for उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन विद एमएसएमई। तो एमएसएमई ने जो भी अपना क्राइटेरिया बदला था इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, वो सारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नेट को यूजी एनटीए को ड्रॉप करना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। अंकटेक जो है वो कंपाइल करता है ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रेशियोज। तो ऑप्शन 3 में इज द करेक्ट आंसर। ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए एट द ग्लोबल लेवल ये चीज compiled होती है। Next is a company in the sewing machine business diversified into kitchenware and household appliances and sell these items through a chain of retail stores to family consumers. This is an example of concentric diversification. So option A is the right answer. Next is a consumer wants to purchase a laptop. She make a list of selected brand and then evaluate select brand in terms of each relevant attribute. Compensatory decision making चल रही है। तो again सीधे सीधे हम बिना पढ़े आगे A पे टिक कर देंगे। उद्यम assist portal platform is developed by the SIDBI cater to which of the following enterprises। तो आप वेबसाइट पे भी जाके अगर आप देखोगे तो वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस इज द डी इज द राइट आंसर। वी डोंट हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव अ कस्टमर डिपार्टमेंट। हर्ब केलर ने ये स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कहा था, जिसमें हम कस्टमर की नीड्स को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। तो स्टेटमेंट सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है मिल्क प्रोडक्ट्स के ब्रांड दिए हैं और इनके रेवेन्यू जनरेशन में इन्हें हमें अरेंज करना है। मैं इसको बहुत ही कठिन क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, और सही आंसर इसका हो जाएगा AEDCB। तो इसलिए बी को आप टिक कर दोगे।